ऑलराइट, आज हम बात करेंगे हैशटैग्स के बारे में। हैशटैग्स फॉर आर्ट अकाउंट्स। हैशटैग्स क्या है और उसे कैसे यूज़ करना है ये मोस्टली आप सब जानते होगे, बट स्टिल कुछ बातें शायद आपको पता नहीं होगी, जैसे कौन से हैशटैग्स यूज़ नहीं करने चाहिए, या 30 हैशटैग्स तो इंस्टाग्राम पे अलाउड है, बट कितने हैशटैग्स की एक्चुअल में ज़रूरत होती है, और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में। तो अगर आपका आर्ट अकाउंट है इंस्टाग्राम पे तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। Well, my name is Sajan and I post content related to art. I'm a traditional fine artist turned digital artist. Anyway, let's talk about today's topic, hashtags. So hashtags are important for art account on Instagram because they help you reach a wider audience and connect with potential fans and customers. 4 major benefits देखेंगे hashtags के बारे में, but especially if you have an art account. First benefit is visibility. So hashtags can greatly increase the visibility of your art content by making them discoverable to users who are searching for a specific type of art. For example, अगर आप watercolor artist हो जो landscape painting में काम करते हो, तो you can include hashtags like landscape painting or hashtag art of nature or maybe hashtag watercolor landscapes. When users search these kind of hashtags, they will be able to see your posts and discover your artwork. This can lead to more engagement such as likes, comments and few followers, which can increase your visibility even further. Second benefit is connecting with art communities. Instagram has a large art community and hashtags can help you connect with other artists and art lovers. By using relevant hashtags, you can join in on art-related conversations, discussions, art challenges, discover new artists and build relationships with others in your industry. This can lead to opportunities for collaboration, networking and exposures for your work. By the way, description में मैंने अपना Instagram का user ID और link mention कर रही है. Do visit my Instagram account and connect me there as well. साथ ही इस वीडियो के कमेंट में आप अपने आर्ट अकाउंट के हैंडल भी मेंशन करना मत भूलना। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट इज अट्रैक्टिंग पोटेंशियल कस्टमर्स. हैशटैग्स कैन आल्सो हेल्प यू अट्रैक्ट पोटेंशियल कस्टमर्स हु आर इंटरेस्टेड इन बाइंग योर आर्ट. रिलेवेंट हैशटैग्स यूज करके आप अपने पोस्ट्स को ऐसे लोगों के सामने रख सकते हो हु आर लुकिंग टू बाय सम आर्ट. For example, if you are selling your paintings, you can use hashtags like art for sale or hashtag buy art to make your work more visible to people interested in buying art. अगर आप NFT में काम करते हो तो you can use hashtags like NFT artist or hashtag NFT creator, something like this. Next benefit, building your brand. Hashtags can also play an important role in helping you build your personal brand as an artist. By consistently using relevant hashtags, you can establish yourself as an expert in your field or type of art and build a reputation for your work. This can help you gain recognition and credibility and make it easier for people to find and follow your work. Additionally, by using hashtags that are specific to your art style, you can create a unique brand identity that sets you apart from other artists. Overall, hashtags can be an effective tool for art accounts on Instagram to increase visibility, connect with the art community, attract potential customers, and build your personal art brand. By using relevant and targeted hashtags, you can improve the reach and impact of your art on the platform. आगे 2 पार्ट्स में इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे. सो बेसिकली इस टॉपिक के 2 पार्ट्स हो गए. इस पार्ट में हम देखेंगे कौन कौन सी मिस्टेक्स हैशटैग्स से रिलेटेड आप कर सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगा जो आप आपके आर्ट पोस्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हो. तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बटन पे क्लिक करो और बेल आइकन भी प्रेस कर देना. तो लेट्स स्टार्ट विथ मिस्टेक्स. तो जाने अनजाने में कुछ मिस्टेक्स हम करते हैं वाइल यूजिंग हैशटैग्स ऑन आवर आर्ट पोस्ट्स और रील्स. 6 मेजर मिस्टेक्स हम देखेंगे. फर्स्ट मिस्टेक इज ओवर यूजिंग हैशटैग्स. अपने आर्ट वर्क्स या आर्ट अकाउंट की विजिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए हैशटैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बट हैशटैग्स को ओवर यूज करने से अपने आर्ट पोस्ट या अपने आर्ट अकाउंट को सही ऑडियंस के सामने ले जाना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है. ऑल्सो ओवर यूजिंग हैशटैग्स कैन लुक स्पैमी टू इंस्टाग्राम, एंड इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ऐसा है कि स्पैमी पोस्ट्स या स्पैमी अकाउंट्स की रीच अपने आप कम हो जाती है या
अकाउंट्स या पोस्ट डिलीट भी हो जाती हैं। Additionally, the use of many hashtags can make it seem like you are trying too hard to get noticed, कोई तरीका है भीख मांगने का? which can negatively impact your image. दूसरी मिस्टेक है using oversaturated hashtags. Hashtags are a great way to increase visibility and reach on Instagram, जैसा मैंने पहले भी बताया था, but they can also be easily overused and become saturated with too many posts. When this happens, posts under that hashtag may get lost in a sea of content, making it difficult for individual posts to stand out and be seen by the targeted audience. For example, popular hashtags like #art or #artist on Instagram are frequently used by many users and are therefore highly saturated. Posts that are tagged with these kind of hashtags are competing with a large number of other posts, making it more challenging for your post to be seen by other users. आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हिट लाइक बटन, इट विल हेल्प दिस वीडियो टू रीच मोर पीपल लाइक यू, और आपको भी मेरे नेक्स्ट वीडियोस आपके एक्सप्लोर फीड में अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा। तो हाँ, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मिस्टेक इज यूजिंग irrelevant hashtags. When you use a large number of hashtags, it's a common mistake to include irrelevant or misleading tags or hashtags. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कॉमिक रील्स पोस्ट करते हो और आप अपने रील्स पे हैशटैग ड्राइंग ऑफ द डे और हैशटैग वाटर कलर आर्टिस्ट ऐसे कुछ हैशटैग्स यूज़ करते हो, ये आपके कंटेंट के लिए रिलेवेंट नहीं है. Including irrelevant hashtags can confuse potential followers and damage your credibility. So next mistake is using banned hashtags. Some hashtags, such as those related to adult content or spam, are banned by Instagram. Using these kind of hashtags can result in your post being hidden or even deleted. Make sure to research the hashtags you are using to ensure that they are not banned by Instagram. Next mistake is not updating your hashtags. Popular hashtags can change over the time, so it's important to regularly update your list of hashtags to ensure that you are using relevant hashtags that are being searched by other users. Next and last mistake is not using location hashtags. Location hashtags can help you reach the right audience by connecting you with people who are interested in art in your area. Make sure to include relevant location hashtags in your posts to increase their visibility. For example, अगर आप पुणे से हो तो you can use hashtag like artist in Pune. अच्छा, कमेंट में बताना आप कहाँ से हो, बट यूज़ हैशटैग्स. जैसे मैं अगर मुंबई से हूँ तो आई विल राइट इलस्ट्रेटर फ्रॉम मुंबई और इलस्ट्रेटर इन मुंबई, हैशटैग यूज़ करना है. ठीक है. लेट मी चेक व्हाट टाइप ऑफ लोकेशन बेस्ड हैशटैग्स यू विल बी यूजिंग ऑन योर इंस्टाग्राम फ्रॉम नाउ. 5 से 10 रिलेवेंट एंड टारगेटेड हैशटैग्स यूज़ करके यू कैन इफेक्टिवली रीच अ वाइडर ऑडियंस विदाउट अपीयरिंग स्पैमी और ओवरवेलमिंग. Additionally, by using only relevant hashtags, you will be able to attract people who are genuinely interested in your content, which can help you build a more engaged and dedicated following over the time. Hashtags effectively कैसे यूज़ करना है उसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बट बिफोर दैट आपने कौन कौन से हैशटैग रिलेटेड मिस्टेक्स अभी तक अपने आर्ट अकाउंट्स पे करी है, ये आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना. अभी के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इंपॉर्टेंट टिप्स ऑन हाउ टू यूज़ हैशटैग्स फॉर योर आर्ट अकाउंट्स. So stay tuned and don't forget to subscribe to this channel. See you in the next. Bye.